Hello students, the question is consider a capacitor circuit charged by a battery to a potential difference V naught as shown in the figure. When a dielectric slab is inserted into both the capacitors, new potential difference will be option 1 V naught, option 2 V naught by K, option 3 8 V naught by 5K and option 4 8 V naught by K. So the problem is based on the basic concepts of capacitors, and the concepts are the charge of the capacitor is given by capacitance multiplied by voltage Q equals to CV. Then the charge conservation principle, it means that the earlier overall charge is equal to the final overall charge. So this concept is used here. So now let us solve this particular problem step by step. The potential difference across these two capacitors is V naught. It means that the charge on suppose this capacitor, first capacitor, it is Q1, it is given by the capacitance multiplied by the voltage across it, which is C naught into V naught. So this is the charge on this capacitor. Now similarly, the charge on the second capacitor, suppose it is Q2, Q2 is given by the capacitance, which is 3 times C naught multiplied by the voltage, which is 3 C naught V naught. So this is basically the charge on the second capacitor. In this way, the total charge Qt, the total charge is given by C naught V naught plus 3 times C naught V naught, which is equal to 4 times C naught V naught. So this is the total initial charge. Now dielectric slab is inserted in both the capacitors, but in the first capacitor it is having a value of K, whereas in the second capacitor it is having a value of K by 2. The capacitance of the first capacitor without the dielectric is C naught, and the capacitance of the second capacitor without the dielectric is 3 C naught. So in this way we can say that the new capacitance of the first capacitor, this first capacitor, becomes C naught times K, and the capacitance of the second capacitor, it becomes 3 C naught K by 2, because we know that the formula of the capacitance without the dielectric is given by C equals to epsilon naught A upon D, whereas for the dielectric case, the capacitance is given by K epsilon naught A upon D. So a K is multiplied here. So that's why we multiply here K, because of this dielectric. So these are the new capacitances. Now let us assume that the new voltage is V dash. Let us assume the new voltage be V dash. So when the new voltage is V dash, the charge on the first capacitor, suppose we call it as Q1 dash. So Q1 dash is equal to the new capacitance, which is C naught K multiplied by the new voltage, which is V dash. So C naught K V dash is the charge on this first capacitor. Similarly, the charge on the second capacitor Q2 dash is given by the capacitance, this new capacitance, which is 3 C naught K by 2 multiplied by the new potential, which is V dash. So this is the second charge. So the net charge Qt is equal to the sum of these two. So this becomes C naught K V dash plus 3 C naught K by 2 V dash. So this becomes, this is 1.5, this is 1. So it is 2.5 times C naught K V dash. So this is the total charge. Now we know that from the charge conservation principle that the charge is conserved in a system if there are no dissipating elements, because the dissipative element, they convert the energy into heat form. So there is no resistor in this particular circuit, it is open. So that's why the capacitors will hold the charge. So Qt remains same for both the cases. So if we call this equation as equation 1 and this equation is equation 2, so the left hand side is same because the total charge remains same. So in this way the right hand side must also be same. So we can say that 4 C naught V naught, 4 C naught V naught is equal to 2.5 times C naught K V dash. So C naught cancels from both sides and V dash becomes, this becomes 4 V naught upon 2.5 times K. And 2.5 can be written down as 5 by 2. So this becomes 4 V naught upon 5 by 2 times K. Now this 2 goes into the numerator and we get 8 upon 5 V naught by K. This is the
new potential difference across these two capacitors, parallel combination of these two capacitors. So in this way, V dash is 8 by 5 V naught by K. So option 3 is the correct option here. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि एक कैपेसिटर सर्किट है जिसको एक बैटरी से चार्ज किया गया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, जो फिगर में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। एक कैपेसिटर C नॉट है, दूसरा 3C नॉट वैल्यू का है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया है बोथ कैपेसिटर्स में। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, तो थोड़ा सा इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्लैब्स यहाँ पे फिगर से जो हमें पता लगता है वो पता लगता है कि अलग अलग स्लैब्स हैं, क्योंकि के दोनों के लिए डिफरेंट है। इसके लिए के है, इसके लिए के बाई 2 है। तो ये स्लैब्स इंसर्ट कर दी गई। अब ये पूछा जा रहा है कि इस केस में अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए कैपेसिटर्स के। फॉर एग्जांपल Q इक्वल्स टू CV, चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। चार्ज कंजर्व रहता है अगर कोई रेजिस्टिव एलिमेंट डिसिपेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज में कोई टोटल चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यानी फर्स्ट केस में जो चार्ज है टोटल और जो फाइनल केस में जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेंगे। फर्स्ट केस में चार्ज निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के क्रॉस चार्ज निकाला हमने बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले कैपेसिटर्स के लिए चार्ज आ गया आप हमारा इसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द अप्लाइड वोल्टेज, तो ये हो गया C नॉट V नॉट। इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखा है V नॉट और उसकी वैल्यू है 3C नॉट, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3C नॉट V नॉट। ओवरऑल चार्ज के लिए दोनों को सम हम करेंगे तो ये बनेगा 4C नॉट V नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करी हैं तो उसके बाद इनकी जो कैपेसिटेंसेस हो जाएंगी रेस्पेक्टिवली वो हो जाएंगी C नॉट के, पहले की, दूसरे की हो जाएगी 3C नॉट K बाई 2। इस तरह से कैपेसिटेंस हमने लिख ली। उसके बाद हमने वोल्टेज को मान लिया V डैश, इन दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज को मान लिया V डैश, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये V डैश हम लेके चलते हैं तो चार्ज जो पहले कैपेसिटर में होगा वो होगा इसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय ये वोल्टेज, यानी C नॉट K मल्टीप्लाइड बाय V डैश। तो इस तरह से हमने ये पहला टर्म लिख लिया यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू Q1 डैश, इसको हमने बोला Q1 डैश, C नॉट K इंटू V डैश। दूसरे एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है आया उसको हमने बोला Q2 डैश, तो वो बराबर होगा इस कैपेसिटेंस और इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के। तो 3C नॉट K बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई V डैश, ये दूसरे कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो वैल्यू होगी। दोनों का सम किया टोटल चार्ज निकालने के लिए और उसके बाद हमने चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दोनों चार्जेस को बराबर रख दिया और उसको फर्दर हमने सॉल्व किया, तो जिससे हमारा फाइनल जो पोटेंशियल निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेकंड कंडीशन में, वो निकल के आता है 8/5 V नॉट बाई K। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।